अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाहिद चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद रज़ा। नाज़रीन, आज सुबह से आप पीटीवी पर ट्रांसमिशन मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा का जो इजलास है, 17वां गैर मामूली इजलास है जो जारी है। इसमें तकारीर हो चुकी हैं और इसके एजेंडे के हवाले से हम पहले भी बार बार बात कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि अफ़गानिस्तान के हवाले से इसका जो आज का जो एजेंडा तय किया गया था, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात होगी। वहाँ पर जो ह्यूमन क्राइसिस इस वक्त जन्म ले रहा है उसके हवाले से बात की जाएगी। और जिस तरह से बताया जा रहा है, यूएनडीपी की एक रिपोर्ट हमें बता रही है कि अगले साल तक 97% अफ़गानी जो हैं वो गुर्बत की लाइन से नीचे जा सकते हैं। और वहाँ पर ज़िंदगी जो है जिस तरह से मुतासिर हो रही है, गुर्बत, भूख और अफलास इस वक्त जिस तरह से हमें नज़र आ रही है, यकीनन वो पूरी दुनिया के लिए बेहद काबिल तशवीश बात है। बेरोज़गारी 29% बताया जा रहा है कि मज़ीद बढ़ रही है। वहाँ पर सैलरीज देने के लिए अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उनके पास पैसे नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर सूरत हाल वहाँ पर क्या होगी। वहाँ पर बच्चों के इलाज के लिए जो है वसाइल दस्तयाब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी गंभीर सूरत हाल का जो है इस वक्त मंजर पेश कर रही हैं। पाकिस्तान हमेशा से बहुत संजीदगी का मुजाहरा करता रहा है और हमारी ये कोशिश रही है कि हमारे बॉर्डर्स जो हैं उनको महफूज करने के लिए, पूरे रीजन के जो है उसमें अमन के लिए ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में जो है पीस प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पिछले 40 साल से अफ़गानिस्तान में इसी किस्म के हम मोरलेस हालात देखते आए हैं और इससे पहले भी पाकिस्तान कोशिशें करता रहा है। लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब ने जब समिट से ख़िताब किया तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी हमने बहुत देर कर दी है, इससे पहले कि इससे भी ज़्यादा देर हो जाए, मज़ीद देर हो जाए, हमें आगे बढ़ना होगा सबको मिलकर। तमाम इस्लामी ममालिक OIC की इसमें जो शामिल हैं और इसके अलावा P5 कंट्रीज़ भी शामिल हैं, बहुत सारे मुबसरीन भी हैं, आलमी इदारे भी हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें शामिल हैं। तो यकीनन सूरत हाल जो है हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब एलामिया जारी होगा तो उसमें कुछ हौसला अफजा चीज़ें सामने आएंगी जिससे अफ़गानियों का जो मसला है किसी हद तक वो हल हो पाएगा। जी शहजाद। जी बिल्कुल नाहिद, आपने सही पॉइंट आउट किया और ये सऊदी अरेबिया के ताउन से पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव और एक बहुत बड़ी किसे कह सकते हैं कि आप सिफारतकारी की एक कामयाबी है कि आपने OIC के पूरी लीडरशिप को एक प्लेटफॉर्म पे इस वक्त इकट्ठा किया है। और क्वेश्चन है अफगानिस्तान का। लास्ट जो पाकिस्तान के अंदर वज़राए ख़ारिजा की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था और आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि पिछले 40 साल से कोशिशें जारी हैं किसी तरीके से अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आए, लेकिन कई वजूहात की बिना पर और आलमी ताकतों की अपनी पॉलिसीज़ की वजह से ये स्टेबिलिटी अभी तक अफगानिस्तान में नहीं आ सकी। और सब ने ज़बरदस्त तकारीर की, जितने भी इस वक्त अपने अपने ममालिक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वज़राए ख़ारिजा हैं, उनके नुमाइंदे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर ख़ारिजा इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म ने भी तकरीर की और जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा ये मैन मेड क्राइसिस बन गया है और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा अगर इस पर कोई इंटरवेंशन ना की गई। लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने जो 6 नकाती एक फार्मूला पेश किया जिसमें उन्होंने ये बात ख़ास तौर पे कही कि किस तरीके से हम मिलकर एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स बना सकते हैं कि जो अफगानिस्तान की मदद करे कि वो लीगलाइज बैंकिंग चैनल के ज़रिए अपना निज़ाम चलाएं। फ़ंड यकीनन क्रिएट होगा, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको किस तरीके से आगे चलाया जाएगा उसके लिए भी एक मैकेनिज़्म बनाना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ कैसे आप दीगर जो चैलेंजेस हैं जिसमें इस वक्त इंसानी बहरान का मसला है, इलीगल वहाँ पे जैसे नारकोटिक्स ट्रेड है या दहशत गर्दी है, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारी ट्रांसमिशन चल रही है PTV की, आज सुबह से आप देख रहे हैं और इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब का आपका ज्वाइन करने का। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपकी जानिब मैं पहले आता हूँ और ये सवाल ये है कि पाकिस्तान ने एक 6 नकाती फार्मूला या प्रोग्राम या प्रपोजल पेश किया है और ये मेरे ख्याल में फ्रेमवर्क है। आप फंड क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो पाकिस्तान की तजावीज़ हैं उस पर अमल करेंगे तो यकीनन अफगानिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, अगरचे इसमें वक्त लगेगा। जी शुक्रिया शहजाद। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो तजवीज़ है बीइंग ए होस्ट कंट्री और अलॉन्ग विद सऊदी अरेबिया, तो पाकिस्तान ने काफ़ी गौर व खौज के बाद ये 2 तजावीज़ जो 6 नुकात पेश किए हैं उसके हवाले से जो एक्सपर्ट्स का ग्रुप का तयन करना और उसके मेंबर्स को एक ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ करना, और ये एक बड़ी ऐसन तजवीज़ है और आई एम श्योर कि मुश्तरका एलामिया जब सामने आएगा तो पाकिस्तान की इस तजवीज़ का खैर मकदम भी किया जाएगा और उसके ऊपर कोई पेशरफ्त भी होगी।
میں زیادہ اس پہ اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی طرف سے ایک تجویز ہے، اس تجویز کی کتنی پذیرائی ہوئی ہے یا اس کو کس حد تک ایکسیپٹ کیا گیا ہے، وہ ہمیں مشترکہ اعلامیے کا انتظار کرنا پڑے گا، جو کہ میں امید کرتا ہوں کہ جلدی ہمارے سامنے آ جائے گا، پھر اس پہ تفصیل سے ہم بات کر سکیں گے۔ اور دوسری بات جو فنڈ کی ہے، اس کے حوالے سے میرے خیال کے اندر اس کو OIC کے فریم ورک کے اندر وہ فنڈ کو اسٹیبلش کیا جائے گا، اور اس فنڈ کے حوالے سے اس کی ڈسپرسمنٹ کے لیے ایک میکنزم بھی طے کرنا ہوگا۔ لیکن یہ دونوں تجاویز بہت ہی ایک کنسیڈرڈ اور وہ حوالے سے ہیں، تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ان تجاویز کا نہ صرف خیر مقدم کیا جائے گا، بلکہ ان کے حوالے سے جو بھی پریکٹیکل آسپیکٹس ہیں وہ بھی سارے کا سارا اس حوالے سے طے کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے سر، یہ 6 نکاتی جو ہماری طرف سے جو تجویز آئی ہے، تھوڑا سا آپ بھی اپنی اوپینین دے دیں کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس پر کام آگے بڑھے گا، پیش رفت کیسی ہوگی، P5 کنٹریز بھی اس میں شامل ہیں۔ اوورآل جو اس وقت بحران ہے، سب سے زیادہ تو ہمیں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے سب مل کر کیا تجاویز دیتے ہیں۔ جب اعلامیہ آئے گا، اصل صورتحال تب سامنے آئے گی، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ کون کیا اناؤنس کرنے جا رہا ہے اور زیادہ بہتر طریقے سے چیزیں کیسے آگے بڑھ پائیں گی۔ جی ہاں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ انیشیٹو پاکستان کو لینا ہی تھا۔ اگر یہ ہم انیشیٹو نہ لیتے تو یہ جو بحران ہے جس کا وزیر اعظم نے ذکر کیا ہے، یہ بڑھتا جاتا اور ہمارے لیے مشکلات بہت زیادہ ہو جاتی۔ پچھلے بار کیا ہوا، جب آپ کو مثال دوں کہ 41 سال پہلے ہم نے ایکسٹرا آرڈنری سیشن فارن منسٹرز آف OIC کا کیا تھا اسلام آباد میں یہاں ہی، تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ اس کا ہم نے اس میں کوئی لائحہ عمل نہیں طے کیا، اور وہ ایک فورم ہوا جس میں کہ تقریریں ہوئیں اور سب نے سوویت یونین، اس زمانے میں سوویت یونین کے انٹرونشن کو کنڈیم کیا وغیرہ۔ وہ 1 آئٹم ایجنڈا تھا، یہ بھی تقریباً 1 آئٹم ایجنڈا، بالکل ایسے ہی ہے، مگر یہ فرق ہے افغانستان کے بارے میں ہے۔ وہ تھا افغانستان کے اندر جو مداخلت ہوئی ہے اس کے بارے میں۔ تو اب اس مرتبہ جو صورتحال ہے اس میں اول تو انیشیٹو اچھا ہے، دوسرے اس انیشیٹو میں اٹینڈنس اچھی ہے، جو وزرائے خارجہ پہنچے ہیں وہ اچھے نمبرز میں ہیں، ظاہر ہے سارے نہیں آئے ہیں، لیکن ٹھیک ہے سر، آپ مجھے اجازت دیجیے گا، میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں۔ ابھی جو سارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، کچھ ہی دیر میں اعلامیہ بھی جاری ہو جائے گا، بتایا جا رہا ہے کہ شاید ابھی وہ مشترکہ پریس کانفرنس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ چلیے جیسے ہی وہ آتا ہے تو ہم اس کی طرف واپس آتے ہیں، آپ اپنی بات مکمل کریں۔ جی ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ سر قطع کلامی معاف، میں دوبارہ آپ کی طرف واپس آتی ہوں۔ ناظرین، اعلامیہ کے حوالے سے ہم بہت دیر سے انتظار بھی کر رہے ہیں کہ جب جاری ہوگا تو اس میں کیا بتایا جائے گا، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ یہ ابھی کچھ دیر میں ناظرین جو ہے وہ اعلامیہ جاری کر دیا جائے گا اور ایگزیکٹ سچویشن ہمیں معلوم ہو جائے گی۔ Extraordinary session of the OIC Council of Foreign Ministers. It has just concluded with the adoption of a resolution on humanitarian situation in Afghanistan. You have before you Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi, Chair of the 17th Extraordinary Session, and OIC Secretary General Hussein Ibrahim Taha. We will first have opening remarks from the Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi, and later a few remarks from Secretary General Taha. At the conclusion, we will take a few questions. Without further ado, Foreign Minister. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let me begin by thanking you and waiting here patiently for the presser. As you know, we've just concluded the 17th session of this extraordinary CFM. I'd like to, at the very beginning, thank all the foreign ministers who participated in this extraordinary session, and I'm happy to share with you that 20 foreign ministers
10 deputy foreign ministers participated in this. So at the ministerial level, we had 30 representations. There were 70 delegations that participated in this extraordinary session, called at a very short notice, and there were 437 delegates who came to Islamabad, and I thank all of them. I also wanted to thank, at the very beginning, special representatives on Afghanistan from the P5. We wanted the message to go beyond the Ummah, and that is why we invited the special representatives on Afghanistan of the P5 countries. They participated, and they also made their statements. The European Union special representative was here on the instructions of Mr. Borrell, who I met in Brussels, and he promised, and I'm grateful to him, to send his special representative, and he participated and contributed. I'm also grateful to the special representative of Germany, Japan, Italy, and many other international organizations, international financial institutions for their very valuable contribution. A special thanks to the Kingdom of Saudi Arabia, His Majesty the King, the Crown Prince, and the Foreign Minister, who took a very keen interest and initiated this conference. And I'm grateful to the OIC countries for reposing confidence in Pakistan and allowing Pakistan to host this conference. A special thanks to the Secretary General for his leadership, for his support, and the support of his Secretariat. Without his stewardship, this conference would not be possible. So thank you, sir. You heard, and you were in the opening session, but let me share the closed session with you. The Afghans were heard, and their delegation was invited so that they could share with the rest of the international community here on what the developments were and are post 15th of August. And they did, and they highlighted. And interestingly, when I was listening to the special representative of United States of America, Mr. Tom West, there was an acknowledgement and a certain amount of appreciation. And he also said on the safe passage and in many other areas, the interim setup was cooperating with them. And you also saw that today they also had an engagement. They met and they exchanged views. Now this in itself, ladies and gentlemen, is a major development. Forces that did not see eye to eye, that had serious reservations, are now engaging and talking. So to that extent, I think it was an important opportunity. It was equally important for the Afghan authorities to interact, and they had a number of bilaterals, I'm told, while I was chairing the session. And in those bilaterals, I am sure they were sensitized to the expectations of the international community. I hope
and it's my desire, it was my desire, that this conference, this extraordinary session, will play the role of evolving a better understanding and bridge the trust deficit. It'll take time, but I think at least the ball has started rolling. Number of things that have come out clearly from the deliberations that took place, and I'll share them with you. One, that there is a awareness and a recognition that a humanitarian crisis is looming, and we've got to do something about it. The other thing is that if we do not act and act now and swiftly, then the economic collapse is inevitable. The third message that I think went loud and clear, and the Prime Minister in his statement made it very, very clear, that time is of essence. The other message that came out clearly from many delegates, and that was that we could have a difference of opinion with the authorities, but our focus is the 38 million people of Afghanistan. That's the focus. And the realization amongst many regional players, particularly the immediate neighbors of Afghanistan, that God forbid, if things go wrong, it's not just Afghanistan that will be impacted. Neighbors will be equally impacted. And in my statement, I tried to highlight that it's not just the neighbors that will be impacted. The consequences will be felt beyond the region. And finally, that helping Afghans is a shared responsibility. Pakistan alone, despite the goodwill and the desire, we can't do it. It has to be a shared responsibility. And everybody has to chip in and play their effective role. Now, two documents have been adopted and adopted unanimously. One is the joint resolution on Afghanistan humanitarian situation, and the other is the Islamabad Declaration on the Palestinian situation. The entire conference expressed, in my view, unity and expressed support for the people of Afghanistan. There was talk about how to devise a mechanism for disbursement. First, raise resources to help people, and when you do, how do we disperse that? There has to be an institutional mechanism developed and adopted. COVID-19 hasn't vanished, it's still there. And there was a thought and a suggestion that the OIC Secretariat should engage with WHO for securing vaccines and medical supplies for Afghanistan, because the situation is serious over there.
number of other developments that have, come out of this conference are, and I'll share them with you. One, the conference has agreed, and it was required, to establish a humanitarian trust fund. Two, they've agreed, and we've all agreed, to launch a food security program for Afghanistan. Three, we collectively feel that we have to unlock financial and banking channels because the economy cannot function and people cannot be helped without banking services. 4, there has been an agreement to appoint a special envoy of OIC for Afghanistan. Because OIC has so many things to look at, there has to be a focused person just looking at the Afghan situation. And 5, that there was a need felt to forge a partnership between OIC and the UN system. The UN agencies can work and are working in Afghanistan, and many donors are comfortable, giving their resources to them, and they feel that they will be well utilized. Finally, there is a view and there's a call on the international community and the UN Security Council that sanctions should not impede, we should ensure that sanctions should not impede the provision of humanitarian aid. To that extent, there should be clarity. And economic resources that are made available, these sanctions should not come in the way of money being imparted for schools and hospitals. So that was agreed upon. Let me share with you that this is the beginning. Follow-up meetings would be required. One cannot feel complacent that we have done what was required. No. We have made the international community and the Ummah realize the magnitude of the challenge, how big a challenge it is. And now we will have to work further to actually alleviate the sufferings of the people of Afghanistan. I will conclude by thanking everyone. I want to thank the officers of the Foreign Office, the entire team that worked round the clock to make this happen. I am proud of my officers who have done a great job in such a short time. Thank you. Thank you, Foreign Minister. I will now invite Secretary General Hussein Ibrahim Taha to say a few words. He will be speaking in French and will be translated by his colleague there. Est-ce que ça marche? It's working. Okay. Just press this one. Ah. Mesdames, je vais parler en français. Mesdames, Messieurs, Messieurs les journalistes, vous êtes venus ici nombreux pour nous écouter ce soir. Je pense que l'événement en vaut le coup d'être présent pour écouter, parce que je voudrais en réalité sincèrement adresser mes félicitations à Monsieur le ministre Horachi pour
tout ce qu'il a fait, c'est la réussite de cette journée bien remplie aujourd'hui, c'est bien l'œuvre du ministre des Affaires étrangères de votre pays. Ladies and gentlemen, I would like first of all to thank you for your attendance. I know that the interest that you have demonstrated towards this event, which is worthy of everybody's attention. I would like first of all to express my profound thanks to His Excellency Mr. Qureshi, without whose efforts we would not have been able to achieve full success for this great event. Cette conférence d'une journée a donné plein d'espoir, je suis sûr, au-delà des frontières. Les frères afghans qui sont en train de nous suivre, de suivre cette importante conférence, ont dû se dire, enfin, il y a quelque chose qui s'est fait pour nous. Et cette réunion est la preuve qu'elle a abouti à des résultats bien précieux. Donc je voudrais encore une fois de plus renouveler mes remerciements à tous les personnels des différents qui ont assisté au travail pour organiser cette réunion et à tout le monde et à Monsieur le ministre surtout de les remercier une fois de plus pour tout ce qui a été fait. This conference has been only no more than a one-day conference, but it has been such an important conference and has had an impact beyond its geographical limitations. I would like to, and I'm sure that our Afghani brothers and sisters are following the event and have had a new hope that something at last is being done for their benefit. This is why I would like to once again express my profound thanks to His Excellency the Foreign Minister, Mr. Qureshi, and to all the organizers of this event that worked 24 hours a day to ensure the success of this event. C'est un réel succès parce que à la fin de la réunion, on a assisté à plusieurs interventions de la Banque mondiale, enfin des différents groupes qui sont là et qui peuvent nous aider, les Européens, les Américains, les Anglais. Tous ont pris, leurs représentants ont pris la parole pour soutenir cette réunion, pour annoncer qu'ils pourront faire des gestes pour aider nos frères afghans. Et donc, nous pensons que ça a été un grand succès, que le peuple afghan peut garder l'espoir, que nous sommes leurs frères, que l'OCI travaille pour cela. Nous allons nous mettre, nous avons pu nommer un envoyé spécial de l'OCI pour l'Afghanistan. Tout ça va contribuer, je pense, à alléger tous les problèmes, à alléger la peine de nos frères afghans qui traversent en ce moment, avec l'hiver, la situation doit être très difficile pour eux. Nous espérons que les choses vont s'accélérer. Au niveau de l'ECI, nous ferons tout, nous contacterons tout le monde, nous verrons avec la BID, essayer d'encourager les gens à participer dans les fonds pour aider les populations afghanes qui nous attendent devant cette situation assez difficile. I'm sure that this event has been a real success. This is well demonstrated by the participants that came from all across the world. We have had participants such as the European Union and many other groups, from America, Britain, France. They all came and represented their organizations and took active participation in the event and showed interest and even made pledges for the benefit of our brothers, the Afghani people, who have a reason now to live new hopes for the future. And we, as the OIC, we have done our best. We actually have established or set up a special envoy to represent the OIC in regarding the Afghani affair, and this has given a reason for the Afghani people to feel greater hopes for the future, especially that now we are going towards the winter season,
and we will do everything to alleviate their situation. Tout à l'heure, j'avais cité l'envoyé spécial, mais à côté de cela, il y a d'autres succès aussi qui ont été adoptés lors de cette conférence. C'est la BID qui ouvre un compte, la Banque islamique de développement qui se connaît dans l'aide humanitaire, va ouvrir un compte logé chez eux et encourager tous les pays du monde, les organisations, les pays, même les personnalités, d'agir, de déposer dans les fonds qui sont loués pour ça. En outre, Mention of the special envoy of the OIC to Afghanistan for this purpose, but I should not omit to mention that there have been other successes which came in the form of the involvement of the Islamic Development Bank that has opened a special account, a special fund for the benefit of Afghanistan. This will be used for services, for assistance to Afghanistan, and we are thankful to all the countries that will cooperate with the Islamic Development Bank and contribute donations, countries, organizations, and even individuals that have expressed readiness to make pledges and contribute to this special fund. il y a aussi la décision qui a été prise, et c'est apparu dans la résolution, que sous l'égide de l'Académie islamique internationale du fiqh, qui est un organe de l'OCI, on va entrer en contact avec les groupes d'uléma, si possible, les uléma ad-din, pour voir comment ils peuvent déjà entrer en contact avec nos frères afghans, pour voir si on peut déjà amorcer une discussion avec eux à ce niveau-là. Donc je pense que c'est très important. Il y a les aides, c'est sûr, mais il y a aussi les contacts qui, pour la première fois, ça va être organisé par l'OCI et on espère que ça donnera des effets positifs. We have also involved one other branch of the OIC, which is the Islamic Fiqh Academy, who have proposed to set up and to reach out to the ulama body for them to seek to bring together the conflicting parties and establish a dialogue between them, such as to help promote action towards peace and stability in the country. This, I believe, is a positive aspect that needs also to be highlighted. Tout cela a été fait grâce à la décision des autorités de l'Arabie saoudite et du Pakistan, qui nous ont permis de travailler ensemble, d'appeler le monde entier, les intéresser à cette situation grave qui sévit en Afghanistan. Mais je tiens personnellement à remercier l'Arabie saoudite pour cette idée, d'organiser cette conférence, et bien sûr le Pakistan, la République islamique du Pakistan. Je voudrais leur rendre un hommage particulier en tant que secrétaire général de l'OCI pour avoir l'idée d'organiser cette réunion et d'apprêter les contacts et les aides. En ce moment où on parle, il y a plusieurs vols humanitaires qui ont été envoyés par l'Arabie saoudite vers l'Afghanistan. Donc nous pensons qu'il y a des choses concrètes qui ont été faites et le Royaume d'Arabie saoudite et la République islamique du Pakistan doivent être félicités, remerciés en fait par tout le monde. As a matter of fact, if I have said all this, I should say that the credit goes to the Islamic Republic of Pakistan and to the Kingdom of Saudi Arabia, both of whom thought about convening this event and allowed us to work wholeheartedly such as to achieve the successes that we have attained. Therefore, I personally, as Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation, would like to reiterate our deep thanks to the Kingdom of Saudi Arabia and to the Islamic Republic of Pakistan for having helped us
achieve such concrete measures for the benefit of our brothers in Afghanistan. Cette conférence qui s'est tenue hier, aujourd'hui, hein, et depuis hier elle a un peu commencé, je pense que nous pensons et les observateurs pensent que c'est la plus grande conférence qui ne s'est jamais tenue de cette façon sur le problème afghan. Parce que ça fait 40 ans que l'OCI, que les pays musulmans se réunissent, mais cette réunion, cette conférence qui s'est déroulée aujourd'hui, je crois que c'est la plus importante et je crois qu'elle aura des succès palpables dans les jours qui suivent. As a matter of fact, this conference that has taken place today, and that started actually yesterday, therefore over 2 days, has been one of the greatest events ever. For, as we note, the sufferings of the Afghani people has been ongoing for the last 40 years. And many people agree that this event has been of greatest importance and may give us hope for better future on this ground. And that this has been the greatest event ever with regard to the Afghani issue. L'Organisation de la coopération islamique, dont je suis le secrétaire général, mettra tout en œuvre pour soutenir le peuple afghan. Et je l'ai dit aujourd'hui aussi en tant que secrétaire général, pour qu'on fera tout pour soutenir le peuple afghan et en même temps exprimer toute notre gratitude aux êtres membres qui ont permis à l'organisation de jouer son rôle prépondérant dans la fourniture de l'aide humanitaire et du développement au peuple afghan. I, as Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation, would like to reiterate the importance of this event and reiterate also our gratitude to all the member states that have helped us and reached out to us to achieve this success that will help us in terms of the humanitarian role that we can play. Je voudrais donc ainsi finir mes propos. Je voudrais remercier tout le monde pour leur patience et leur écoute de ce que je viens de dire. Je vais redonner la parole à Monsieur le ministre et lui dire merci beaucoup. Thank you very much. So once again, I would like, before concluding, I would like to express my satisfaction with this great event and reiterate my profound thanks to His Excellency the Minister for all that he has done to help us. Thank you, Secretary General Taha, for your remarks. Colleagues, ladies and gentlemen, let me make just one point before I start giving the floor. Please wait for my signal before you take the floor, and also please try and limit yourself to one question because there's a lot of interest in this room. You please. Thank you. This is Shabir Bagra from PTV World. My question is with the Secretary General, Excellency, that during today, as you mentioned, that it has been established, it has been decided to establish a trust fund. Any pledges made by the member states that any amount, any specific amount that has been pledged for the fund, number one, and number two, there is, as Prime Minister also said, that there is immediate need for winter-like relief and assistance. Any immediate steps decided during the meeting? Tout à l'heure, quand j'ai intervenu, c'est pour dire que c'est suite à cette conférence qui s'est tenue aujourd'hui qu'on verra des dons qui vont venir. On n'a pas encore établi des relations avec l'Afghanistan. C'est sûr qu'on n'a pas encore établi des relations, mais on est en train de penser à comment pouvoir faire. Par exemple, le secrétaire général de l'OCI
pourra, dès qu'on commencera, envoyer notre envoyé spécial qui va là-bas pour voir un peu la situation, voir comment ça peut se discuter. Donc pour le moment, on en parle, on s'organise. Rapidement, je crois, les décisions vont être prises, mais pour le moment, on n'a pas de contact direct avec l'Afghanistan. Donc on ne peut pas parler d'une aide qui a été déjà envoyée, à part celle de quelques pays. So, as a reply, His Excellency the Secretary General is saying that, yes, indeed, we have established this contact, we have established this fund, but we are not yet in contact with the Afghani authorities. We shall do so soon through our envoy, and we shall find out about their needs. That is when we shall start getting donations. We have not yet received any donations, but it's only after this real and direct contact with the authorities in Afghanistan that we shall hopefully start receiving donations for their benefit. I'd like to clarify that. You see, I'm aware of some countries who wanted to donate and are willing to donate. But they required some kind of a account, which was acceptable to all of them. There are many who want to donate, but do not want to donate directly. They want to have some mechanism which they are comfortable with. So this mechanism has been devised. This the Islamic Development Bank account, and pledges will now be made into this account, judging the needs that they have. Obviously, they are aware of the importance of time, and I'm sure once this account is operable, the pledges will start coming in. Thank you. Thank you. Please wait. Do not jump the queue, please. Well, I can't tell you it'll going to happen tonight, but obviously they are aware of the fact that it is required as ASAP. Thank you. Mr. Heather. Thank you, Mr. Foreign Minister. It was indeed a big diplomatic event, but the key focus was to defreeze the frozen financial assets of Afghanistan by the United States. What do you think, and how much hopeful you are and Prime Minister Imran Khan after making these all appeals and speeches? And the U.S. Special Representative was also here. He held also on the sideline meeting with the Afghan Foreign Minister. So that is the most urgent thing that Pakistan has been stressing upon United States to release Afghan's financial assets. And how much hopeful you are that the misperceptions in the West about Pakistan's role in Afghanistan has been removed now, particularly Washington, who has been centric on Afghanistan about Pakistan's role, think tanks, government, establishment, and everything. Thank you. Well, I think you can easily come to the conclusion that United States and other Western players today recognize Pakistan's constructive role, whether it was the peace initiative, the peace process, the evacuation, and now the role Pakistan is trying to play in mobilizing public opinion for an humanitarian assistance. Pakistan's role has come out very clear, very positively. It is being appreciated, acknowledged, and recognized. If you, well, obviously it was a closed-door session, but from the statement made by Mr. Tom West, who is the special representative of the United States of America, I could deduce that there is a shift. For example, he said that he has a clear mandate from his boss, and who is his boss? His boss is Secretary Blinken, to engage with the Taliban. And he has met
the Taliban delegation on the sidelines over here. He has said that, and he said, I want to make a policy statement on behalf of the US, and the policy statement is that we are ready to help alleviate suffering of the Afghan people, right? 2, and they have said that we have come and we have taken a decision that humanitarian assistance will not be made conditional. And also the licensing procedures are being revisited. He also hinted at how the World Bank has provided $280 million. And he also said, and this is quite hopeful, that since international financial institutions were invited and they participated, there is an amount unutilized with the international financial institutions to the tune of $1.2 billion, and now they can find mechanisms of utilizing that. Thank you. We'll take one from the international press, sir, please. The other one. Thank you, sir. I'm not from international, from Geo Television. I'm Zargun Shah. My question for the foreign minister is, Qureshi साहब ये बताइए कि बार बार ये चीज़ दोहराई गई कि अफ़गानिस्तान का बैंकिंग सिस्टम जो है वो कोलैप्स हुआ है, वो बंद पड़ा है, तो उस बैंकिंग सिस्टम को फाल करने के लिए क्या कुछ किया गया है? थैंक यू वेरी मच. देखिए, आपने सही कहा कि बहुत से लोगों को ये एहसास भी है और रियलाइजेशन भी है कि जब तक बैंकिंग चैनल्स नहीं बहाल होते तो मदद जो देना भी चाहता है उसकी तरसील में दिक्कत होगी. मिसाल के तौर पर मैंने पहले भी अर्ज़ किया और मैं दोहरा देता हूँ कि बहुत से अफ़गान हैं जो अफ़गानिस्तान से बाहर हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में हैं, और उनके अज़ीज़ व अक़ारिब अफ़गानिस्तान में हैं. वो उनकी दिक्कत से वाकिफ़ हैं, वो उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो पैसा भेज नहीं सकते बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ बैंकिंग सर्विसेज. अब उसके लिए आसानी पैदा करने के लिए बात हुई है, और ये हो रहा है जैसे कहा है ना कि उनकी जो अनलॉक किया जाए उन चैनल्स को जिससे ये बैंकिंग सिस्टम चल सके, तो ये उस पर बात हुई है. और ये भी उनने कहा है कि बहुत से इदारे ऐसे हैं जो हमें एहसास है कि इस वक्त अपने मामलात को कैश के ज़रिए कैश भिजवाते हैं और उसके ज़रिए वो अपना मामला चला रहे हैं. अब हमने आसानी पैदा करने के लिए फ़ैसला किया है कि बहुत से जो प्राइवेट बैंक्स हैं, अफ़गान बैंक्स हैं, तो उनको ओपन अप कर दिया जाए ताकि उनके ज़रिए तरसील मुमकिन हो सके. Mr. Secretary General, why you people did not discuss about to recognizing the Afghanistan government now? Because did you think to recognizing and helping to the Afghans, it's a big, strong message to the world that it is OIC, Organization of the Islamic Countries, not OIC. I'll try and respond to that. आप अफ़गानों की मदद करने का इरादा रखते हैं ना? अच्छा, अगर नीयत यही है तो फिर धीरे धीरे कदम रखिए. इस वक्त मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मैं दोहरा देता हूँ, इस वक्त रिकग्निशन की एपेटाइट नहीं है. आज बहुत से लोगों ने कहा कि वो मरला आएगा, वो जो कह रहे हैं वो बहुत सी बातें कह रहे हैं, और आज उनने जो उनके नुमाइंदे थे उन्होंने जो बहुत सी बातें की जिन पर किसी को इख्तलाफ नहीं था. मिसाल के तौर पर वो यूएन सिस्टम के अंदर से इत्तला मिली है कि जब से तालिबान ने ज़िम्मेदारी संभाली है, जो कस्टम कलेक्शन है अफ़गानिस्तान की अशरफ गनी के ज़माने से दुगनी हो गई है.
अब कैसे हो गई है? एक्टिविटी तो नहीं हो रही, मतलब बहुत महदूद है ना. जो जेब में चीजें जा रही थी, जो पिल्फर हो रही थी चीजें, वो पिल्फरिज बंद हो गई है. करप्शन पर एक कदगन लगी है. और जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कहा कि हमने करप्शन पर काफ़ी हद तक गलबा पा लिया है, और हमें, क्योंकि अब हमारा निज़ाम मुख्तलिफ है, पहले से बहुत कम वसाइल से भी हमारा काम चल जाएगा. बरतानिया के नुमाइंदे भी थे और भी थे, और उनका मौक़िफ़ ये है कि आपके अल्फाज तो बहुत अच्छे हैं, हम चाहते हैं योर वर्ड्स शुड बी मैच्ड विद योर डीड्स. अब दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है. और मेरी जब मुत्तकी साहब से कल बात हुई, मैंने कहा पाकिस्तान ने तो जो कोशिश करनी थी पाकिस्तान कर रहा है. हम आपके हमसाए हैं, हम आपकी बेहतरी चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, इस्तेहकाम चाहते हैं, और वहाँ की जो माशी बदहाली है हमें उसका एहसास है कि उसके कितने मुज़र असरात आप पर पड़ रहे हैं और खित्ते पड़ सकते हैं. लेकिन हम जितनी भी आपकी मदद करना चाहें, हमारे हाथ आप मजबूत कर सकते हैं अगर आपके रवैये में वो लचक दिखाई देती है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो ख्वाहिशात हैं उसको वो एड्रेस करती हैं. कुछ चीज़ें जो उनकी कंसर्न्स हैं, जो आज उन्होंने कुछ रिपीट भी की हैं, वो अगर आप उनको एड्रेस करते हैं, उनको नज़र आता है कि वो एड्रेस होनी शुरू हो गई हैं, तो आपके लिए आसानी पैदा होगी. और हम जो आपके लिए आसानी पैदा करना चाहते हैं, हमारे हाथ मजबूत होंगे, पर ये आप पर मुनहसर है कि हमारे लिए और अपने लिए कितनी आसानी पैदा करते हैं. Thank you. One question from this side. Thank you so much, sir. Anas Malik. My questions to the Secretary General OIC. Given that the Taliban have not adhered to some of the demands of the international community, particularly with regards to inclusive government or giving rights to women per se and opening up girls' education, did the OIC press the Taliban delegation on this, that whether or not they can compete to these demands and get done with the recognition bit so that the issues at hand can be solved? Thank you. Hans, let me respond to you. The statement made by the acting foreign minister was that we have broadened the base of inclusion in Afghanistan. At the moment, all regions are they're accommodated. We regions, in their view, they've also, in the second expansion, they've also included some other ethnic groups. Obviously, they feel that they are moving in that direction, but the international community feels that they need to do more. They need to do more. So it's not that they are absolute obstinate and there is no movement. There is recognition, there is movement, but they say, let us decide in our own time how to move ahead. On girls' education, yes, they are willing, they have expressed willingness to open up because, they have serious issues of salaries. And they feel they pointed out a number of districts where schools have started functioning, but there are areas where they are not functioning. And there are administrative and there are financial reasons for that. But they feel that the next step forward is expected in March. Last question from this side. थैंक यू सर. राशिदा, अब तक से फॉरेन मिनिस्टर साहब, एक तो ये फरमा दीजिए कि P5 कंट्रीज से कितने प्लेजेस की एक्सपेक्टेशंस है अदर देन ये OIC मेंबर कंट्रीज़, और इसके अलावा इंडिया का जो रोल रहा है अफ़गानिस्तान में स्पॉइलर का, अब आप क्या देखते हैं कि अफ़गानिस्तान फ्यूचर में किसी प्रॉक्सी का शिकार नहीं होगा? शुक्रिया. देखिए, मैं पहले अर्ज़ कर चुका, नहीं एक जवाब देने देना जी, वो फिर वो गड़बड़ हो जाती है. अर्ज़ ये है कि मैं पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका कि प्लेजेस के लिए व्हीकल चाहिए था, वो व्हीकल अब मुरतब हुआ है
اور اس کے بعد آگے بات بنے گی انشاءاللہ. جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، پاکستان ہر فورم پر، اور میری جتنی انٹریکشن ہوئی ہیں مختلف وزرائے خارجہ سے، میں نے انہیں باور کرایا ہے، میں نے ان کو یہ احساس دلوایا ہے کہ ہندوستان کا رول ماضی میں منفی رہا ہے، سپوائلر کا رول ادا کرتا رہا ہے. ہم نے ایک مثبت اشارہ دیا ہے. ہمارے ہندوستان کے ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ تعلقات تو اس وقت نہ ہونے کے برابر ہیں، آپ کے علم میں ہے، لیکن ان کشیدہ تعلقات کے باوجود ہم نے ایک مثبت قدم اٹھایا ہے کہ جو 50,000 ٹن گندم وہ افغانستان کو دینا چاہ رہے تھے، یا ہمیں آزمانا چاہ رہے تھے، یا ہمیں اور ہماری اس آزمائش کے ذریعے ہمیں افغانستان کی نظروں میں گرانا چاہ رہے تھے، ہم نے ان کو یہ موقع نہیں دیا. ان کا خیال تھا کہ پاکستان لینڈ روٹ سے اجازت نہیں دے گا. ہم ان کی نیک خواہشات کو سمجھتے ہیں. ہم نے وہ چال ان کی کامیاب نہیں ہونے دی. ہم نے کہا بسم اللہ آئیے. پھر انہوں نے ایک اور قدغن لگا دی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں وہاں بھیجنے کے لیے ہمیں تو افغان ٹرکس جو ہیں وہ آنے دیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانوں کی مدد ہو. ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے پیچھے بھی ایک جو کہتے ہیں نا ایک خوبصورت سی چال ہے. ہم نے کہا بسم اللہ، ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے. تو ہم نے ان کی ان حرکتوں کو ہم بھانپتے ہیں اور بھانپ کر آگے چل رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، میری کچھ فورن منسٹرز سے میٹنگ ہوئی، ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی پچھلے 2 دن میں، اور کل میری آپ کا بھلا ہو ترکمنستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی، اور وہ یہاں سے دلی جا رہے تھے. میں نے ان سے کہا آپ دلی جا رہے ہیں، انہیں کہیں کہ اپنا منفی رویہ ترک کر دیں. اگر وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں اور اگر وہ افغانوں کی ہمدردی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم افغانوں کے اور افغانستان کے دوست ہیں، تو اس وقت تو انسانیت مشکلات میں ہے نا. تو وہ اپنا منفی رویہ ترک کر دیں اور ایک مثبت رویہ اپنائیں. سینٹرل ایشین ریپبلکس جن کا وہاں ایک ان کا ڈائلاگ ہے، میری ان سے گزارش ہی تھی، میں نے بہت سے وزرائے خارجہ سے وہ جو جا رہے ہیں ان سے میں نے بات کی ہے کہ وہ اس ڈائلاگ میں ہندوستان کے حکام سے کہیں کہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. The press briefing is over. Thank you so much for your questions. ناظرین، اعلامیے کے حوالے سے جو ایکسپیکٹیشنز تھیں اور جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کس قسم کا اعلان کیا جائے گا، صبح سے نظریں اس کے اوپر تھیں، اور جو چیزیں اب اناؤنس کی گئی ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ احساس جو ہے یہ تمام ممالک میں ہے، اور جو اس وقت گراؤنڈ سچویشن ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے افغانستان کی، وہ سب انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر مدد کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اعلان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جو یونٹی اور سپورٹ چاہیے تھی وہ تو اس وقت سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے. ایک فنڈ کے قیام کے حوالے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، ہم لوگ اس کے حوالے سے ڈسکس بھی کر رہے تھے. اس فنڈ کے حوالے سے بھی، ٹرسٹ کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اس کا بھی قیام جو ہے عمل میں لایا جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک میکانزم طے کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. پلیجز کے حوالے سے وہاں پر سوالات بھی ہوئے کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، لیکن شہزاد ابھی ظاہر ہے کہ ان ساری چیزوں کو ٹائم لگے گا. جی بالکل، اور بڑی تفصیل کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایکسپلین کیا کہ آج کی ساری ڈیلیبریشنز میں، اور OIC کے سیکرٹری جنرل ابراہیم طاہا صاحب ان کے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کی تفصیلات ہمیں بتائی ہیں پریس کانفرنس میں کہ یہ
فیصلہ ہو گیا ہے کہ ایک ہیومینیٹیرین فنڈ ہم کریٹ کریں گے. اس کے ساتھ فوڈ سیکیورٹی پروگرام افغانستان کے لوگوں کے لیے لانچ کیا جائے گا, اور فائنینشیل یا بینکنگ سسٹم جو ہے اس کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ان لاک کرنے کی جو بات کی ہے کہ وہ بہت ضروری ہے. ساتھ ہی OIC کا ایک اسپیشل انوائے افغانستان کے اوپر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس کو اسپیسیفکلی فوکس کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو OIC باقی دیگر UN ایجنسیز کے ساتھ, دیگر انٹرنیشنل NGOs کے ساتھ مل کر کولیبریٹ کرے گی کہ کس طریقے سے آگے اس پہ چلا جا سکتا ہے. اور سینکشنز جو ہیں, ایک بہت اہم بات کہا ہے کہ جو سینکشنز لگی ہیں اس وقت افغانستان پہ, ان کو ختم کرنا اس طریقے سے ضروری ہے کہ جو بھی ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے یا ایڈ آ رہی ہے وہ سینکشنز اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. ایک سوال ہوا ان سے کہ کتنے پیسے یا کتنے پلیجز کیے گئے ہیں, تو اس کو ایکسپلین کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ کیونکہ ابھی ایک میکنزم بننا ہے, وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے تحت وہ میکنزم بنے گا. جب وہ اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو پلیجز آئیں گے, اور بہت سے ملک اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ میکنزم بننے کے بعد یقیناً وہ پلیجز آنا شروع ہو جائیں گے. علی سرور نقوی صاحب, آپ سے جو بات ہو رہی تھی, لیکن اب کیونکہ یہ اعلامیہ سامنے آ چکا ہے اور اس پہ کافی تفصیلات سے بات ہوئی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بال ہے وہ رول کرنا شروع ہو گئی ہے, اگرچہ انہوں نے کہا کہ اس کی فالو اپ میٹنگز بہت ضروری ہیں. نقوی صاحب جی ہاں, دیکھیے میں جیسے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہمیں بہت سی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں کہ ہم نے بہتر طریقے سے اس مرتبہ کیا ہے, اور وہ یہ کہ ایکسٹرا آرڈنری سیشن 41 سال پہلے جو ہوا تھا اس میں یہ رزلٹس نہیں, یہ نتیجے نہیں نکلے تھے کیونکہ اس وقت اوپری باتیں ہوئی تھیں. اب بڑی ٹھوس باتیں ہوئی ہیں. ایک تو اسپیشل فنڈ کی بات ہوئی ہے, اسپیشل انوائے کی بات ہوئی ہے, اور اب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اسیسمنٹ کرے گا, یعنی کہ افغان قوم کو کیا چاہیے اس وقت, وہاں کے عوام کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کس حد تک کی ہے, تو وہ سب ہو جائے گا. پھر پلیجز آئیں گی. تو لگتا یہ ہے کہ اب بہت مثبت اسٹیپس لیے جا رہے ہیں, اور جس کے تحت افغانیوں کی بہت بہتری آئے گی, ان کے پرابلمز ایلیویٹ ہوں گے, جو کہ فارن منسٹر صاحب نے کہا. ٹھیک ہے ڈاکٹر رفعت صاحب, سر آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اب چیزیں ذرا تھوڑا تیزی سے آگے بڑھیں گی؟ اب جو بار بار ہم جس ٹائم فریم کی بات کر رہے ہیں نا, وقت کی بات کر رہے ہیں کہ پہلے ہم نے بہت دیر کر دی ہے, اب موسم سرما کا آغاز ہو گیا ہے, بہت لیٹ ہو گئے ہیں, یہ سارا میکنزم طے ہوتے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ زیادہ ٹائم لگ جائے گا یا فوری طور پر اب چیزیں آگے بڑھ جائیں گی؟ جی میرا کنسرن یہ ہے کہ یہ سب اچھی باتیں ہیں جو انیشیٹو لیے گئے, اور جو اس کے معاملے میں جو فنڈ بھی قائم ہوا, اور فوڈ سیکیورٹی پروگرام بھی ہے, فوڈ سیکیورٹی پروگرام بھی ہے, اور فوکل پوائنٹ آن افغانستان کے لیے ایک OIC کے ریپرزینٹیو کی بات ہوئی ہے. لیکن تمام باتوں کے باوجود دیکھیں, جو آج مارٹن گرفن نے, جو کہ UN سیکرٹری جنرل کے اسپیشل ریپرزینٹیو ہے, انہوں نے اپنی تقریر میں 3 چیزیں کہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں فوری طور پہ, یعنی ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ ایمرجنسی ہے, اس کے حوالے سے یہ جو سارے بھی انتظامات ہیں دے میں ٹیک ٹائم, اور وہ وی میں لوز دی ایسنس آف ٹائم. تو وہ اس کے حوالے سے میرا ایک کنسرن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے, گرفن صاحب نے بات کہی تھی کہ میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم کے حوالے سے بھی افغانستان کی ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کی بڑی ضرورت ہے. لیکن اس OIC کے اعلامیے کے اندر ہو سکتا ہے کہ گروپ آف ایکسپرٹس بنا دیا انہوں نے, ہو سکتا ہے کہ اس معاملے پہ توجہ دیں, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی لانگ ٹرم افغانستان کی جو ریکنسٹرکشن ہے یا ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے, یا ان کی اکنامک ریوائول کی ایک ضرورت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم صرف ایمرجنسی ایڈ تک ہی اکتفا کرتے ہیں تو وی آر کیپنگ دی افغان پیپل آن ڈول, جو کہ کسی صورت میں بھی مناسب نہیں ہے. اور آپ کو آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان کے جو ان کی جو انتظامیہ ہے طالبان نے, انہوں نے بغیر کسی غیر ملکی امداد کے سہارے کے انہوں نے اپنا بجٹ بھی پیش کر دیا ہے, یا انہوں نے بجٹ بنا لیا ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ افغانستان کے جو مسئلے کے
जो का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है उसके हवाले से ये लेकिन डॉक्टर साहब ये बात तो करते हैं कि ठीक है जी इमरजेंसी और जल्द अज जल्द होना चाहिए, एक वक्फा लेना है, लेकिन एक वेरी वन लाइनर कोई क्वेश्चन के एक तरफ सैंक्शंस हैं उन पर, और सैंक्शंस जब हैं और उसके बाद आप कहते हैं जी इमरजेंसी, प्रोवाइडेड कि सैंक्शंस ना होती तो आसान होता ये काम करना, आप अफगानिस्तान की बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद कर सकते थे अगर वो सैंक्शंस ना इन प्लेस। जी मैं आपका 30 सेकंड का जवाब ये दे दूं। देखें, एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि सैंक्शंस को रुकावट नहीं बनना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के प्रोविजन के लिए। ये शाह महमूद कुरैशी की स्टेटमेंट है, मेरी स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन उसके लिए हम अमेरिका को भी कह रहे हैं कि आप अपना रवैया जो है वो तब्दील करें। तो ये जो एक डायकॉटमी है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को बाईपास करते हुए आप किस तरीके से जो अफ़गानियों की बराह रास्त मदद करने के हवाले से, और फॉलो अप मीटिंग्स का भी जिक्र हुआ, तो फॉलो अप मीटिंग तो सिर्फ उसी सूरत में होती हैं जब आप एक नॉर्मल सूरत हाल के साथ डील कर रहे हैं। जब एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेशन के हवाले से जो सवाल हुआ है तो उसके हवाले से कम मुझे जो लगा है कि एलामिया की बुनियाद के ऊपर और जो शाह महमूद कुरैशी ने और जो ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी ने एक्सप्लेन किया उसके अंदर कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब ढूंढना बड़ा जरूरी है। जी शहजाद जी एक वक्फा लेना है नाज़रीन हम, लेकिन उससे पहले एम्बेसडर अली सलमान नकवी साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन वक्फे के बाद वापस आएंगे कुछ नए मेहमानों के साथ, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा।